आई थिंक वी आर लाइव। कंफर्म कर लेते हैं पहले। यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट मैवरिक्स। माई सेल्फ पारस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर। अब सेकंड लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, फजान रूल, है ना, पोलराइजेशन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। अब आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मल चार्ज, और जो मेन टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज वीएससी पीआर थ्योरी। तो वीएससी पीआर थ्योरी, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर्स, शेप्स, बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे, इवन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको भी हम कवर करेंगे। तो दैट इज अ मेन अट्रैक्शन। एंड साथ में रेजोनेंस। रेजोनेंस वैसे केमिकल बॉन्डिंग में उतना डीप नहीं जाता, बट फिर भी रेजोनेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को आवाज सही आ रही है, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए इफ यू आर एबल टू हियर मी। सबको आवाज बढ़िया आ रही है, क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन? ठीक है, और जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं, और बाकी जो लोग अभी नहीं आए हैं जल्दी से ज्वाइन करिए। देखा, ग्रुप पे शेयर कर देते हैं इसको। यस, ऑडियो इज परफेक्ट। चलो, तो 1 मिनट वेट करेंगे बाकी बच्चों के ज्वाइन करने का। आई थिंक कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बताइए बच्चे, कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट रहा हो, बिकॉज शाम को 4 बजे हम इसकी डाउट क्लास भी लेंगे। तो आज के लेक्चर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको आएंगे, वो आज के डाउट सेशन में, जो कि शाम को 4 बजे स्पेशल क्लास में होता है, वहां में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कल के लेक्चर में आई थिंक ज़्यादा डाउट बच्चों को आए नहीं है, पर आज के लेक्चर में आपको डाउट आने चाहिए, बिकॉज वीएससी पीआर थ्योरी आज कवर होगी। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, आपके वीएससी पीआर से पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल्स एंड डाइपोल मोमेंट। राइट, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, तो ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा चलो, आप लोगों से एक बार जल्दी जल्दी 1-2 बच्चों को और वेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे लोग भी आ जाएं। तो हाउस योर प्रिपरेशन गोइंग, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। सारे बच्चे रेगुलरली सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को। तो ये ठीक ठाक चल रही है, इसको थोड़ा और अमेजिंग बनाना है हमने को। तो उसके लिए फुल मेहनत आप लोगों ने भी करनी है, और जब जब डाउट आए इमीडिएटली सेम डे शाम को आके क्लास में पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बताना कि मैंने आपके लिए, क्योंकि अब मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, तो आपके लिए मैंने 2 सेटअप्स डिज़ाइन किए हैं क्लास के लिए। तो एक सेटअप ये है, ओके, मुझे बता देना कि आपको ये सेटअप ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, कैसा लग रहा है। ओके, एंड तो दिस इज वन ऑफ वन सेटअप, इसका नंबर आप 1 दे दीजिए, एंड दिस इज सेटअप नंबर 2, इसको नंबर आप 2 दे दीजिए। तो क्या जल्दी से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे सेटअप 1 आपको बेटर लग रहा है या फिर सेटअप सेटअप 2 आपको बेटर लग रहा है, जल्दी से। 1 और 2, फिर उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चलेगा, सरकार तो उसी की बनेगी जिसकी मेजॉरिटी होगी। जल्दी जल्दी बाकी लोग भी बताओ यार, जल्दी से क्या करना है, कौन से सेटअप में क्लास स्टार्ट की जाए। 1 में, चलो ठीक है, फिर 1 में कर लेते हैं। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो कल हम रुक गए थे यहाँ पे
कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज के ऊपर। तो फॉर्मल चार्ज कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बड़ा ही आसान है। तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक में ना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के बड़े कॉम्प्लिकेटेड से टेढ़े मेढ़े से तरीके होंगे, पर हमने वो तरीके यूज़ नहीं करना है। हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको कवर करना है। एंड दैट सिंपल मेथड क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं भी। देखो, तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर्मल चार्ज देखो होता क्या है। फॉर्मल चार्ज ऐसा है जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल आपको दूं, लेट्स से CO3 2 नेगेटिव, राइट। इस स्ट्रक्चर पे 2 नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल। यस सर है। बेटा ये 2 नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली कहाँ पे है? जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो वो 2 नेगेटिव चार्ज हम ऑक्सीजन के ऊपर डालते हैं, राइट। तो आउट ऑफ 3 ऑक्सीजन, क्या सर 2 के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा है, कहाँ कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब बोलते हैं ना, जैसे आपका डेबिट एंड क्रेडिट की लिस्ट होती है ना, बही खाता इसको कहते हैं। कितना आ गया, कितना चला गया। तो जब भी कोई भी रिएक्शन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का या तो गेन होगा या लॉस होगा, तो अगर आपको यही चीज पता नहीं है कि किस एटम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कार्बन की वैलेंसी है 4, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर वो एक एक्स्ट्रा गेन कर रहे तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएंगे, और लूज कर ले तो फिर 3 हो जाएंगे, राइट। तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, अगर लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो गेन करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज हम उसके ऊपर किस तरह का प्लेस करते हैं, उससे ये पता लग जाता है कि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कार्बन के ऊपर अगर मैं लिखूंगी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो चुका है, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज, सॉरी 1 पॉजिटिव चार्ज आया। उसी कार्बन पे अगर मैं लिखूंगी यार 1 नेगेटिव चार्ज आया है, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एक और उनमें से आ चुका है, तो टोटल 5 हो चुके हैं। तो इसीलिए फॉर्मल चार्ज मेंशन करने से आपको ये पता लगता है कि इस मूवमेंट पे इस एटम के पास, इस एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है? अगर किसी भी एलिमेंट के पास जितनी उसकी वैलेंसी है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज 0। ओके, तो इन दिस केस 0 फॉर्मल चार्ज। अगर उसके पास n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा वैलेंसी से n ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो वैलेंसी से जितने ज्यादा होंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे -n आ जाएगा आपका। और वैलेंसी से n कम हो गए हैं तो ये +n आएगा। मतलब वैलेंसी से अगर 2 कम हो चुके हैं तो +2 आएगा, वैलेंसी से 2 एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं तो -2 आएगा। बस इतना सा आपको करना है। जो टेढ़े मेढ़े से फॉर्मूलाज हैं बुक्स में, उन पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बेटा यहाँ ये जो हाईलाइटेड एटम्स हैं कलर्ड वाले, इन पे बताना आपको फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो क्या जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी से देखो। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो सर पता कैसे चलेगा इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो बच्चे, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो तीनों बॉन्ड में से एक एक इलेक्ट्रॉन तो दिया ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, राइट। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉर्मल कार्बन के पास तो 4 होते हैं, एक कम हो गया ना, तो इसीलिए इसके ऊपर लिखेंगे 1 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देन सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे इस ऑक्सीजन की, इसके पास कितने आपको दिख रहे हैं? सर यहाँ पे 3 लोन पेयर हमें दिख रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो साफ दिखाई दे रहे हैं। और सर इस बॉन्ड में भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7वां यहाँ पे हो गया। बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 6 होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर इस नाइट्रोजन की बात करिए। नाइट्रोजन के पास आपको कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? नो सर। तो बच्चे कितने बॉन्ड बना रहा है ये? सर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो चारों बॉन्ड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना इसके पास। नॉर्मल वैलेंसी इसकी 5 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, मतलब एक की शॉर्टेज है, तो +1 पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। देन CH3CN में नाइट्रोजन के पास यहाँ पे देख लीजिए, एक पेयर है 2, और इन ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 और 3 5, 5 का मतलब है अगेन वैलेंसी के बराबर ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई कम नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन के पास एक पेयर है, तो बाकी 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 3 5, 5 का मतलब नॉर्मल वैलेंसी से एक कम हो गया, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा।
देन अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें, बताइए यहाँ पर कितना होगा? जल्दी जल्दी, अब देखो मैं फुल स्पीड पे चलने वाला हूँ, राइट? आज हमें काफी कुछ कवर करना है। तो इस ऑक्सीजन की बात करें बच्चे, 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड है, तो ये 6 और 1 7, दैट इज -1 चार्ज यहाँ पे आएगा। और लास्ट वाली ऑक्सीजन की बात करें, 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक पेयर, मतलब 3 2 5, 5 का मतलब एक की शॉर्टेज हुई तो +1। समझ गए? वैसे बाकी सर इस कार्बन की बात करें तो बेटा कार्बन के 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, चारों बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो मतलब कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट में एक और क्वेश्चन भी है, CH3N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर इस नाइट्रोजन की बात करें, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो चारों बॉन्ड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 5 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट इज 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। ओके, तो आई थिंक फॉर्मल चार्ज की कहानी सबको क्लियर होगी। फॉर्मल चार्ज की कहानी सबको क्लियर होगी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट ने क्या किया, he drew the following 3 Lewis structure for the nitric acid, which one is preferred? अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए फॉर्मल चार्ज की एक और बात को समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, आप बोलते हो सर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर बना रहे थे, मतलब बन रहे थे, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, तो HNO3 के लिए उसने ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाए। अब हमें ये बताना है यार सबसे ज्यादा इनमें स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि जो सबसे स्टेबल होगा वही प्रेफर्ड स्ट्रक्चर होगा। तो प्रेफर कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा स्टेबल है? अब सोचिए, जो भी आपके फॉर्मल चार्ज हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किस पे होने चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा चार्ज आना चाहिए? सर नेगेटिव। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, है ना? जैसे कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो क्या लगता है नेगेटिव चार्ज मैं कार्बन पे रखूं बेटर है या फिर ऑक्सीजन पे रखूं तो बेटर है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही अपनी तरफ खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अच्छा रहता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ड्रू द फॉलोइंग 3 लुईस स्ट्रक्चर। अब देखिए सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले में हम बच्चे फॉर्मल चार्ज को जल्दी से मेंशन कर लेते हैं, किस पे कितना होगा। इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, एक लोन पे ड्रॉ कर रखा है, देखिए 2 3 4 5। अब अगर आपके माइंड में आया सर यहाँ पर एक और लोन पेयर नहीं होना चाहिए था, सर ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं, है ना? देखो बच्चे, इस ऑक्सीजन का ऑलरेडी, बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ी ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जिनका नॉर्मली बच्चों को ध्यान नहीं रहता। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ सर है, कैसे? सर 3 तो ये बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक पेयर है, 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ जी। क्या बच्चे ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है कभी? कभी इसके पास 9 10 ऐसे 11 12 इलेक्ट्रॉन्स कभी आ सकते हैं? कभी भी नहीं सर, कभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते सर? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो सेकंड पीरियड का मतलब इसके पास 2s और 2p हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल। तो सर 4 ऑर्बिटल में टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है। तो ये चाहकर भी अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर आप गलती से यहाँ एक और पेयर लगा देते तो ऑक्टेट एक्सीड करवा देते और वो गलत हो जाता। तो अभी देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे, 2 3 4 5, तो 6 से एक कम हो गया, इसके ऊपर आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज। देन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के भी 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बंधु के पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन की बात करें, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स और 7वां बॉन्ड में, है ना, मतलब 6 तो आपके पास लोन पेयर से मिला के ही आगे, 7वां यहाँ पे हो गया। इस ऑक्सीजन के पास भी 3 लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 7, तो इसके ऊपर भी एक एडिशनल है, तो -1 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा। ओके बेटा, बहुत ज्यादा चार्जेस भी अच्छे नहीं होते हैं। अब देखो टोटल 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो ओवरऑल तो स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, पर फिर भी 2 पेयर बन गए ना, 2 पॉजिटिव आ गए 2 नेगेटिव आ गए, तो बहुत ज्यादा चार्जेस अच्छी बात नहीं होती है ना? इट्स नॉट गुड टू हैव सो मेनी चार्ज सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, HNO3 की नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के पास, इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑक्सीजन विल बी एग्जैक्टली 6 2 4 5 6, राइट? तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स देर इज नो एक्स्ट्रा एंड नो डिफिशियंसी, तो जीरो फॉर्मल चार्ज। देन टॉक अबाउट दिस नाइट्रोजन हेयर, तो इस नाइट्रोजन में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स,
तो 1 शॉर्टेज है ना, फ्रॉम द नॉर्मल 5 वैलेंसी देयर इज 1 शॉर्टेज और 1 डेफिशिएंसी, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। एंड इस ऑक्सीजन की बात करें, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड्स, तो 2 4 5 6 नॉर्मल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो नो फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास 7 है, तो -1 फॉर्मल चार्ज। तो दिस इज अ गुड वन। क्यों? बिकॉज प्रीवियस स्ट्रक्चर में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव थे, यहाँ पर 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। जितने कम चार्ज के पेयर बने उतना अच्छा रहता है, उतना स्टेबल रहता है। तो दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज लेस चार्ज सेपरेशन। मोर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मींस ओवरऑल तो न्यूट्रल है, पर चार्ज सेपरेट हो रखा है, अलग अलग हो रखा है। ठीक है। देन इस वाले की बात करेंगे, सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सीड कर चुका है। दिस इज नॉट अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। व्हाई नॉट अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर? बिकॉज nitrogen has 10 electrons, okay, in its वैलेंस शेल। तो ऑक्टेट एक्सीड बच्चे नाइट्रोजन के लिए कर ही नहीं सकता, तो ये स्ट्रक्चर तो आपका वैलिड होगा ही नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा होगा? सेकंड इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन बिकॉज इट हैज लीस्ट चार्ज सेपरेशन, राइट। और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पे था, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर था। तो ये अच्छी बात हुई, क्लियर है गए? Anu bache, the problem is that when we started with the English, actually we expected better response, but I think the response was not that great. So ultimately, like most of the students wanted Hindi or English. Okay, so the point is, it's not us who decide. It is all about the students. Okay, बच्चों, तो ये क्लियर हो गया? जब भी आप बोलते हो ना, कई बार आपके दिमाग में आता होगा, सर व्हाई ओनली दिस स्ट्रक्चर for this molecule? Why not some different structure? Because when you do the stability analysis for every structure, then the structure that has the maximum stability, okay, that will be the final structure or that will be the preferred structure. तो इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि क्यों एक स्ट्रक्चर बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। A student drew the following Lewis structure for the sulfite ion SO3 2 negative. Is this the best Lewis structure for the ion? चलिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये आपको बताना है क्या ये सही है, जल्दी से बताइए। इज दिस द राइट स्ट्रक्चर फॉर सल्फाइड आयन? सल्फाइड आयन इज SO3 2 नेगेटिव। यहां पर अगर आप देखेंगे तो व्हाट हैपेंस, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? 0 फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन पे 0 फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन पे 0 फॉर्मल चार्ज, राइट। और इस सल्फर पे क्या हो गया? सल्फर की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? सर सल्फर की नॉर्मल वैलेंसी 6, राइट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस सल्फर हैज? इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 2 4 6 और 8, तो मतलब पूरा का पूरा जो -2 का चार्ज है वो इसी सल्फर पे आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, ये सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज अगर आपको रखना भी होगा तो आप किस पे रखना प्रेफर करोगे? डेफिनेटली ऑक्सीजन पे। तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट द बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर। वी शुड मेक अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए जहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा हो, सल्फर पे नहीं आ रहा हो। तो इसीलिए हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये तो सल्फर के पास नॉर्मल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यस, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए पूरे, हाँ जी। और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स इनके पास 3 3 लोन पेयर हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस भी ओ पे नेगेटिव चार्ज आता है उसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं, और जो ऑक्सीजन न्यूट्रल रहता है उसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, राइट। तो दिस इज द प्रेफर्ड स्ट्रक्चर। तो बच्चों दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके,
Acha, everybody tell me if I take this session in English or more in English. ठीक है, तो will that be comfortable? Will you guys be comfortable with that? I'll try to make it more English or more like towards English. ठीक है. I'll try to maintain balance between both languages. Okay, चलिए next question देखते हैं. In phosphate ion, the formal charge on the oxygen atom of the PO bond is formal charge कितना है? Phosphate. So now to understand the formal charge, we need to know the structure first. When you draw the phosphate ion, PO4 3 negative. Now I'll give you the basic structure. You must have heard the structure H3PO4 phosphoric acid, right? आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे. So this H3PO4, the structure is like this. P double bond O, OH, OH, OH. This is phosphoric acid. So when you remove 3H positive from this, you remove 3H positive, then what you get is, right? अभी मिलेगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर. So this is your phosphate ion, PO4 3 negative. Okay. So in this PO4 3 negative, what is the formal charge on the oxygen atom? Look, 3 oxygen have 1 negative charge and 4th oxygen has 0 charge. Okay, but is this the real structure? Tell me. Harshit, bache, that was not SO3. That was SO3 2 negative. Sulfite. Okay. Previous question जो हम कर रहे थे, that was not SO3. SO3 2 negative. तो बताइए, is this the real structure? No. There will be resonance. तो जिन बच्चों ने resonance पढ़ा हुआ है, they will understand that yes, sir, there is some resonance. Why? Because, sir, out of the 4 bonds, 1 is a double bond, rest 3 are single bonds. Okay. But in this case, I have shown this particular bond to be a double bond. मैंने इसको मैंने double bond बनाया, but ये वाले 3 मैंने single बना दिए. In another structure, I can show this as a single bond and maybe this one as a double bond. Okay, next time I can show this as a double bond and rest 3 as single bonds. So it is totally up to me. So that means there is no guarantee that this particular bond will always be a double bond. Or if you check the real data for the structure, by looking at this structure, it might feel that one of the bond is a double bond, so that is a shorter bond, and rest 3 are single bonds. Rest वाले जो 3 होंगे, they will be longer. लंबे होंगे वो comparatively, right? But in the actual data, all 4 bond lengths are same. How is that? Because the negative charge is delocalized. It is in resonance. So sometimes you can make double bond here, sometimes in this one, sometimes here, sometimes here. So means the double bond is actually delocalized. Double bond is not fixed in one position. It is delocalized. It means it is shared equally by all 4 bonds. So the real structure will be something like this. What is this dotted bond? This is partial double bond character. So because double bond is shared by all of the bonds. So if you divide one bond into 4, okay, if I give you one cake and you have to divide it in 4 parts, so each person will get 1/4. Yes. So this one bond will be divided in 4. So this will get 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. So what is this total bond? Is it a double bond? No, sir. It's a single bond plus 1/4. So इसका bond order कितना होगा? 1 plus 1 by 4, that is 1.25. So this is how you also calculate the bond order. Okay. Bond order here is 1.25. And now if I talk about 3 negative charge, ये जो 3 negative charge आ रहा है, this 3 negative charge is actually equally divided by all. Equally shared among all the oxygens. So I have 4 oxygen, and if I have to divide 3 negative charge among 4 oxygen, then each oxygen will get how much? Each oxygen will get minus 3 by 4.
तो आंसर कितना आएगा? -0.75, right? And this is only because of the resonance. So if you answer from this structure, so that O has a negative charge, 3 oxygen have a negative charge, 1 is 0. Basically, 3 negative charge is shared equally by 4 oxygens. Because real structure is not like this. It is more like this. Because all bonds are equal in length. Okay? चलिए next one. SCN negative. चलो, I am giving you this question as a homework. We'll discuss in the doubt class. Okay? Write all the possible Lewis structure for SCN negative and assign formal charges. We'll discuss in the evening class. Okay? Then this one also as a homework. Calculate the formal charge on the atom in carbonate ion. Now, next is the limitation of octet rule. Now, octet rule ने क्या कहा था? Everybody basically tries to complete their octet, right? But sometimes there are examples when the octet was not complete and still the molecule was stable. So first case is incomplete octet, like BeCl2, BCl3, AlCl3. So in BeCl2, beryllium is making only 2 bonds. So that means only 4 electrons in its outer shell. Octet is not complete. BCl3, boron is forming 3 bonds. That means 6 electrons in the octet. So still octet is not complete. Okay. AlCl3, same scenario. So this is one of the cases when the octet is not complete. We have lesser number of electrons. Second is odd electron molecule like NO2. In NO2 or NO, if you count, देखो, nitrogen has 5 valence electrons. Yes. Oxygen has 6. Yes. So nitrogen has 5. Oxygen has 6. So 2 oxygen will have how many? 12. Okay. So 12 plus 5 is 17. 17 electrons can never be paired. One electron will always remain single. That is why NO2 is an odd electron species. You will not have a complete octet of all the atoms. किसी ना किसी एक के पास है ना, at least one of them will have a single electron and incomplete octet. Same is the scenario with NO also. It also has unpaired electron. Okay. So there are and these are species that exist. NO2, it does exist. It is not a very unstable molecule, relatively less stable, but still it exists. Okay, so if the octet rule was the ultimate reality, then this should not exist. Third limitation is expanded octet. Some of the structure, like if you talk about PCl5, phosphorus is forming 5 bonds. 5 bonds mean 10 electrons. Talk about SF6, 6 bonds. That means 12 electrons. So octet is actually exceeding. Okay. In these examples, octet is exceeding. So again, but they are still stable molecules. So octet rule is failed. Then, so octet rule is based on the chemical inertness. So octet rule कैसे बना था? Octet rule बना था when they studied कि यार noble gases are not reacting. And just because they have a complete octet, that means because of the complete octet, they do not want to react. But this is not the scenario. Noble gases do react and they form compound like this, XeF4, XeO2, F2 and all. तो इस तरह के compound बनते हैं. Okay. So that means the foundation of the octet rule was the inertness of noble gases. But later it was discovered that noble gases also react. So they are not as noble as you thought. So that means the foundation of your octet rule is actually flawed. There is a problem. Okay, because noble gases are not really inert, completely inert. They are also reacting. Yes, their reactions are much lesser in comparison to other elements, but yes, they do react. So they are not completely inert. Okay, so the basis of the octet rule was flawed. Then it doesn't account for the shape of the molecules. Octet rule only says that stability is achieved when there are 8 electrons in the outermost shell. It doesn't say anything about the shape. It doesn't provide any relative stability of molecules or energy of a molecule. It doesn't talk about the energy also or the relative stability. Suppose if I have 2 molecules like CH4 and NH3, both have complete octet. Both have complete octet. Can you tell me which one is more stable?
Or can you compare the stability of these two based on the octet rule? No, you cannot. Because octet rule doesn't tell you how to compare molecules, right? Doesn't talk about the stability of molecules or the energy of a molecule. Because these both have complete octet. That's it. So they both are stable, but who is more stable? You cannot say on the basis of octet rule. So these were the main limitations of octet rule. Chile. Now let's move on to the next topic, that is the lattice structure. The lattice structure, what exactly is a lattice? Whenever an ionic crystal is formed, in the ionic crystal, the particles have a particular arrangement, okay, in the solid state. Like if we talk about the NaCl, sodium chloride crystal. Okay. So in the sodium chloride crystal, the Na positive ions and the Cl negative ions, they will be in a particular arrangement. That particular arrangement is called crystal lattice. Okay, because you cannot place all the ions in a random arrangement. Okay, no. Every sodium ion is surrounded by a certain number of chloride ions, and every chloride ion is surrounded by a certain number of sodium ions. Okay, so for every ionic crystal, there is a well defined structure. So it doesn't matter whether you buy your salt from the local shop or maybe from a supermarket, or maybe you go like to the beaches, and from there, by like evaporating the sea water, you collect the salt. Doesn't matter what is the source of your NaCl, the structure will be like this. Okay, so this particular structure of ions is called a lattice structure. Okay, right? And there is some energy released when this lattice is formed. So whenever the Na positive and Cl negative will combine to make NaCl solid, some amount of energy is released. That released energy is called lattice energy. Okay, because whenever these two will come close, there will be ionic bonding, and whenever the ionic bonding takes place or any bond is formed, energy is released. So during the formation of ionic bonds, when 1 mole of a solid is formed, 1 mole of the ionic crystal is formed, then the total amount of energy released is called lattice energy. So bigger is the lattice energy, that means stronger the bond. Okay, so based on the lattice energy values, you can predict how strong or how weak that particular structure is, or how weak or how strong the bonding is. Okay, is that clear? ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट वन. Now look at this structure. This is a lattice. What are these sticks in between? These sticks are just there to help you understand the geometry. Okay, actually there are no these sticks between the particles or ions. There are no sticks. But this type of arrangement will help you visualize the geometry in a better way, in a more convenient way. Okay, and in actual, it looks like this. But when you look at this structure, you might not be able to understand the geometry properly. But when you look at this structure, you can understand it easily. Okay, it is easier for you to understand, right? And they both represent the same thing. They both are representing NaCl, the lattice structure of NaCl. Got it? So can you tell me how many chloride are surrounding one Na positive ion? Because this is the topic that you are going to study in solid state also. I'm just giving you some background information. Can you tell me coordination number of Na positive and coordination number of Cl negative? What is coordination number? How many neighbors are there for every ion? How many neighbors of Na positive are there and how many neighbors of Cl negative are there who are directly in contact with it, who are touching it? So for every Na positive, if you look at, let's say, look at this Na positive, this one here. Okay, 1, 2, 3, 4. 4? Yes. Only 4? Yes. But
there will be another layer after this, and there is one layer behind this. Okay, so there are basically on this axis there are two atoms. On this axis there are two atoms. Similarly, on this axis also two atoms. So total 6. Okay, on the x-axis it is surrounded by 2. 1, 2. On the y-axis 3, 4. And on the z-axis there will be 5 and 6. They are not visible because one atom is just behind this and one atom will be just after this. Another layer here. Okay, similarly, if you talk about chloride, look, this is a chloride, right? This one here. So how many Na positive are surrounding it? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 in x-axis, 2 in y-axis, 2 in z-axis. The coordination number of both is 6. So they are surrounded by 6 ions of the opposite charge. Okay? So this part is also clear. Now let's talk about the lattice energy and the factors that affect the lattice energy. The lattice energy is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions. Or suppose whenever NaCl is formed, how do you write the formation of NaCl? You say the Na positive ions gaseous plus Cl negative ions gaseous will give you NaCl solid. Right? Yes, sir. Now in this case, we have 1 mole Na positive combining with 1 mole Cl negative to give you 1 mole of NaCl. So whenever 1 mole of the solid, ionic solid is formed, there is some amount of energy released that is called lattice energy. One way of explaining this is, it is the energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent ions. जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से, तब जो एनर्जी रिलीज होती है. और उल्टा देखो, ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ इट इन बैकवर्ड्स. ओके, when you add lattice energy to the 1 mole NaCl, it will break into its constituent ions. So you can also define the lattice energy like the energy required to completely separate or break the 1 mole solid ionic structure into its gaseous constituent ions. Okay, now if I ask you a very simple question, बहुत simple सा question आपसे अगर पूछूं मैं, बच्चों, is it possible that I write like mx is any ionic solid? If I write mx plus lattice energy, will give you m positive aqueous plus x negative aqueous. Is it correct if I write it like this? It means that if I'm adding lattice energy to this structure, to this ionic structure, it will give me these ions. Is it correct or is it wrong? बताइए जल्दी से. Is it correct or is it wrong? Correct है तो क्यों है, wrong है तो क्यों है? गैसियस में होगा नालायकों, गैसियस में होगा. How can you say they will be aqueous ions? When the NaCl solid will break, Na positive gaseous and Cl negative gases will be separated. There is no water, so how can you write aqueous? This is wrong. Always pay attention to the minute details. Okay, that's important. Okay, now the lattice energy is का basically formula क्या होता है? What is the lattice energy formula? This is a complicated formula.
Why? Why I'm telling you this? देखो, lattice energy का the simplified formula that you will find in your books is lattice energy is U. Okay, or you can say delta U. Let's say delta U that is equal to, or you can say not equal to, you can say directly proportional to Q1 Q2 divided by R. Okay, what is Q1 Q2? Whenever a solid is formed between two ions, one cation, one anion. Okay, if the cation has a charge Q1 and the anion has a charge Q2 and the distance between their centers is R, then the lattice energy is directly proportional to the product of the charge Q1 into Q2 divided by R. If the R is bigger, delta U is smaller. Okay, what is this formula, sir? Then what is this M, N? These are the factors associated with the crystal geometry. Because अगर मैं बोलता हूँ कि सर डेल्टा यू इज ओनली Q1 Q2 डिवाइड बाय R, and then I take the example of NaCl and CSCl, they both look very similar, right? दोनों बहुत similar लगते हैं, NaCl and cesium chloride. Okay, and for both the positive charge is 1, negative charge is also 1. Q1 Q2 is same. And what about R? R is different, obviously, because Na positive is smaller and cesium positive is bigger ion. So R will be different. But is that the only difference? No. NaCl has a different geometry. Cesium chloride has a different geometry. Their lattice arrangements are different. So don't you think the lattice arrangement will also be responsible, or it will also be one of the factors in deciding the lattice energy? Yes, it will be. So Q1, Q2 and R are not the only factors that decide the lattice energy, but they are the main factors. Okay, so I'm giving you this formula just to tell you, dear, we need to consider the factors associated with the crystal geometry also. But because we cannot memorize those factors, because every crystal will be slightly different, so it is very difficult when you're solving problem. So that is why we use this formula, the simplified version. Okay, so that doesn't mean that this formula is the correct formula. It is just a very simplified version of the original formula. So now you got my point? You got my point? And when I say the delta H lattice इतना है NaCl के लिए, इसका मतलब क्या है? What does this mean? This means that whenever 1 mole NaCl is formed, 788 kilojoule energy is released. That is the meaning of this particular statement here. Okay? Yes. So now, another thing. So, what are the energies involved? How do we calculate the lattice energy? How do we calculate it? Because when you say it's Na positive plus Cl negative, they just combine to give NaCl. But whenever you are making NaCl, आपके पास directly Na positive और Cl negative तो नहीं होता. You have sodium metal and you have chlorine gas. You don't have cation and anion directly available. You cannot go to a shop and say, sir, आधा किलो Na positive देना. You cannot go and buy half kg of Na positive ions or half kg of Cl negative ions. You can buy sodium metal and you can buy chlorine gas. So whenever you are forming NaCl, what are the steps involved? There are so many steps involved in the formation of NaCl. Okay, so let's take an example of formation of lithium fluoride. Okay, we'll take an example of formation of LiF. So during the formation of lithium fluoride, first you buy lithium solid. You have lithium solid in your hand, right? Solid lithium. Then you have to convert it into gaseous form. Why? Because you want only 1 mole and only separated. Okay. So from lithium solid, you convert it into lithium gas. Okay. So sublimation energy is required there. Yes. To delta H sublimation, because converting from solid state to gaseous state, that requires
sublimation energy. बच्चे शाम को भी अभी इनऑर्गेनिक की चिंता नहीं, अभी main focus. Then when you have fluorine gas, you have to break it into atomic form, from molecular form to atomic form. That will require dissociation energy. Okay. So after these two steps, now you have lithium gas and fluorine gas. F gas, मतलब atomic form. Yes. Now you have to convert lithium gas into Li positive cation. That will require ionization energy. Again, input of energy. So here, this is also input, this is also input, this is also input. These are your investments. You are giving energy, spending energy. Then F gains one electron and forms F negative. That is electron affinity. But in this, energy is released. Okay, so some of this amount of energy is released. Then finally, you have the cation and you have the anion. They join to form LiF. And at that moment, what is released? What is released? Lattice energy. That moment, lattice energy is released. Okay, that is lattice enthalpy. So when you add all these steps together, okay, now check. When you are adding all these steps, what happens? What happens? F negative cancel out. Electron cancel out. F gas cancel out. Li positive cancel out. Lithium gas cancel out. What is left? Lithium solid plus half F2 gas gives you LiF. So this is the final step, or you can say this is the overall reaction. Because आपने स्टार्ट कैसे किया था? आपने स्टार्ट किया था लिथियम सॉलिड से प्लस फ्लोरीन गैस से और फाइनली आपको ये मिला. So these two were your reactants and this is your final product. But steps, there were many steps involved. So this is the overall reaction. But ऐसा नहीं है कि overall reaction directly हो गया. The overall reaction actually required these many steps. So how do you calculate lattice energy then? Can you calculate the lattice energy directly? No, you cannot calculate it directly. You can calculate this last step energy that is called delta H formation, heat of formation. You can calculate this experimentally. So this data will be known. Hanji. This data sublimation, you already know this. With all the values of the sublimation energies are already calculated for all the elements. So you already have this data. Dissociation energy, you already have the data. Ionization energy, you already have the data. Affinity, you already have the data. So lattice enthalpy को छोड़ के, except this step, you have the data for all the other steps. Okay, so delta H overall क्या आएगा आपका? The delta H जो formation आएगा, that will be what? It will be delta H sublimation plus delta H dissociation plus delta H ionization plus delta H electron affinity, right? Plus lattice energy. In this equation, you know this value, you know this value, you know this value, this value, this value, but you don't know the lattice energy. But when you substitute all the other values, you calculate the delta H lattice. The lattice energy you cannot calculate directly. Yes, बच्चे ये Born-Haber cycle है. You study about this cycle in thermodynamics, right? ये clear हो गया? Lattice energy we do not calculate directly. Rather, क्या करते हैं हम? We calculate it indirectly. ठीक है? So the formation of an ionic solid, it requires all these steps. Clear है ये? You don't have to memorize these values. This is just to show you actual sequence of steps. How ionic solid is formed step by step. ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये? Everybody done? चलिए. What are the consequences of lattice energy? होता क्या सर? If an ionic solid has a higher value of lattice energy and another ionic solid has a lower value of lattice energy, what will be the difference? क्या फर्क पड़ेगा उससे? देखिए क्या फर्क पड़ेगा. First thing, melting and boiling point. Melting and boiling point, higher lattice energy means
higher melting and boiling point. Because higher lattice energy means the bond between the ions, the cation and the anion, the bonding between them is strong, very strong bonding. That means it is difficult to separate them, right? So, to boil that liquid or to melt that solid, that means taking away ions from each other, or at least introducing some kind of mobility movement in the system, right? Stronger the attractive forces, higher the melting and boiling point. This will give you higher melting and boiling points, right? देखो जैसे NaF के लिए क्या है 997 डिग्री सेल्सियस, बट फॉर MgO इट इज 2800. व्हाई इज दैट? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू beta U is directly proportional to Q1 Q2 divided by R, and the Q1 Q2 is the major factor here. It is the deciding factor here. ठीक है, तो उससे क्या होगा देखो, NaF में क्या है, the Q1 Q2 is 1 into 1, but for MgO it is 2 into 2, that is 4 times. And you see the melting point is also very much higher. 997,000 से almost 3,000 चला गया. Okay, so the moment the charges are different, you will see there is a sudden big change in the melting point and boiling point. Okay, so ये clear है? This example is clear to everyone, right? पता है अभी समस्या क्या हो रही है? What is my thought process right now? There are 3-4 students who are like, sir English में. There are 3-4 who are like, sir Hindi English चलेगा. And there 2-3 students, sir हिंदी में चलेगा. So I'm like, if I open a restaurant, one person says I'll have Chinese, another comes Italian, third is North Indian, and I have one chef, that's me. ना सब्जी पकाऊंगा मैं, ठीक है, क्या क्या पकाऊंगा, मतलब क्या क्या चलेगा. Everybody wants very different flavor and there are majority के लिए उतना भी नहीं है. इतना मिली जुली सरकार बनेगी, nobody has a proper majority. Green tea is my only friend in this hour. दुख दर्द पीड़ा. जब लेक्चर खत्म होगा, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स विल कमेंट. Hey, I'm not saying that your demand is wrong, but the problem is students should attend the classes, right? है ना सचिन बालक? Students should attend the classes regularly. वो होता नहीं है. फाइनली बच्चे बोलते हैं सर ये नहीं हुआ हमारा, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, एंड लगता है यार बेटा जो अटेंड कर रहा था, जो पढ़ रहा था, उसका तो हुआ. चलो देखो, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज, सेकंड कॉन्सिक्वेंस इज इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. देखो NaF NaCl NaBr, यहाँ पे क्या हो रहा है? Q1 Q2 is same. Q1 Q2 is same, right? But anion is getting bigger. Cation is same, anion is getting bigger. When the anion gets bigger, क्या होता है? The polarization increases. Fajan's rule. Anion is getting bigger means more polarization. That means more covalent character.
And you know बच्चे, covalent bonding is stronger or ionic bonding is stronger? Which bonding is stronger? Covalent bonding ज़्यादा strong होती है, ionic bonding ज़्यादा strong होती है. Ionic is stronger. So if more covalent character comes, then ionic bonding थोड़ा सा weak होगा. Yes, that will cause decrease in the melting point. So you see, NAF का melting point 997, NaCl has 801, NaBr has 747. Okay, another way of explaining this is also, sir, Q1 Q2 is same, but sir R is increasing, क्योंकि NaF का bond जो distance होगा सबसे छोटा होगा. In NaCl the R will increase, NaBr it will increase further. Okay, as R increases, lattice energy drops. Lattice energy drops, that means attractive force जो है वो कम हो रही है, तो melting point भी कम होगा. Got it? So these are the two examples where Q1, Q2 is same, but R is changing. And also because of the R or anion getting bigger, polarization is greater. That is also giving you more covalent nature. This data I have already explained you in the last class. Right? LIF, LII. How can you explain this value? On the basis of R. Okay. What are these values? These values are lattice energy values. In kilojoule per mole. You can see how the lattice energy is changing. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ये डेटा आपको मिल जाएगा. कल मैं क्लास में ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. नाउ जस्ट गो थ्रू दिस कंपैरिजन, आयनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. Just go through this comparison once. बोलिए बच्चों. देखो, ionic compounds, smallest components are ions. Molecular compounds, obviously smallest component or the constituents are molecules. ठीक है, ionic compound किससे बनते हैं normally? Metals and non-metals, because ionic bonding takes place between metals and non-metals. But molecular compounds mostly are composed of non-metals. These are crystalline solids. But molecular compounds, they can be gases, they can be liquids, or they can also be solids. Okay. Then ionic bonding, because that is strong bonding, so the melting point is higher. In covalent or the molecular compound, there is covalent bonding. So low melting point, higher boiling point, then low boiling point. Conduct electricity in molten phase or in dissolved phase, in aqueous phase. But molecules में क्या होगा? There are no ions, there are no charge carriers, so they do not conduct electricity. And many ionic solids are water soluble because they are polar, so like dissolves like. But molecules, they are mostly water insoluble, mostly. ठीक है, ये क्लियर है ये? अब देखो कैसे कैसे आयनिक से कोवलेंट कैरेक्टर में जाते हैं हम. When you go from ionic to covalent or covalent to ionic, look how everything changes. Cl2 has maximum covalent character. Maximum covalent character. Why? Because there is no electronegativity difference. Bond has highest covalent nature, maximum covalent nature. So chlorine is a gas. Then SCl2, it is liquid. Okay. It has a little electronegativity difference, so a little ionic character. PCl3 has a little more ionic character. SiCl4 has a little more ionic character.
AlCl3 has more, MgCl2 has more, NaCl has a lot of ionic character. So as ionic character is increasing, you can see if we are going from gas to liquid to solid. Why? Because more ionic character means stronger forces. Stronger attractive forces means you will have in you will have the compound in solid state. इसलिए ionic compounds are mostly formed in solids. Mostly. You will have ionic solids only. You will not have ionic liquids because bonding is very strong. ठीक है? इस इमेज से you will understand how the bonding is related to the state of matter. ठीक है बच्चों? Everybody clear about this? Next one. Bond energy और bond enthalpy. बताइए. The relative strength of bonds. चलिए बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी को पहले मैं आपको एक्सप्लेन नॉर्मल तरीके से करता हूं. बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली क्या है इसको समझते हैं. इसको समझते हैं तो अच्छा पहले आप मेरे को बताओ कि कितने बच्चों को आता है ये. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि इसको और कैसे कुछ नया कर सकते थे इसमें. बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. क्या लगता है आपको क्या होता है. व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी. इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. यस. फॉर एग्जाम्पल आप CH4 के एग्जाम्पल लो. CH4 में देर आर 4 CH bonds. Yes. So they are all same. They're all CH bonds only. तो आपको क्या लगता है in CH4 the energy required to break all those 4 bonds will be same, exactly same. Tell me. अगर 1 by 1 मैं CH4 के चारों bonds को तोड़ता हूं, if I break the bonds of CH4 one by one, so will it take same amount of energy every time or will it be different, slightly different amount of energy? सेम एनर्जी लगेगी चारों बॉन्ड को तोड़ने में या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी. वैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए. वाटर में ऑक्सीजन 2 H के साथ जुड़ा हुआ है. देयर आर 2 OH बॉन्ड्स. तो इफ आई ब्रेक देम वन बाय वन तो उनको वन बाय वन तोड़ने में सेम एनर्जी लगेगी और विल दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ आई ब्रेक देम वन बाय वन. आप लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंट लगेगी. क्यों लगेगी डिफरेंट. चलिए देखते हैं. ये वाला बेटर है ये वाला बेटर है. देखो होता क्या है. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिटरमिन वेदर हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब. उसके बारे में बात करेंगे अलग से. देखो जैसे H2 plus F2 gives you 2HF, राइट. नॉर्मल आपको बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक दिस सिंपल एग्जांपल है ना. सिंपल सरल एग्जांपल लेते हैं. बेटा H2 plus F2 से जब 2HF बना 546 किलो जूल एनर्जी वाज रिलीज्ड. अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. कहां से आई ये एनर्जी 546 कैसे आई. तो आप थोड़ा सा सोचेंगे. You think hard, you can say, sir, H2 is like this, F2 is like this, and HF is like this. Yes. So, sir, ये वाला bond तोड़ना पड़ेगा, right? We will have to break this bond, and we'll have to break this bond. इन दोनों bonds को तोड़ने में कुछ energy लगेगी. So there will be input of energy in both these bond breaking. But when a new bond is formed, energy will be released. बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और जो नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. इट्स जस्ट अगर इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने में इफ दीज टू बॉन्ड्स दे रिक्वायर्ड
100 amount of energy to break them. But ये नया bond जब बना, when this new bond is formed, there is 200 amount of energy is released. So you invested 100 and you received 200. There is a profit. That is this value, 546. That is a difference. Difference of what? Difference of the bond energies. The amount of energy required to break this bond plus amount of energy required to break this bond and the amount of energy released when new bonds are formed. This is the difference. ठीक है? But क्या जरूरी है कि whenever a compound is formed, energy will be released only? Is it necessary? कि जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है या कोई कंपाउंड बनता है, is it necessary that energy will be released? No, it is not necessary. Because अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 200 का होता और आउटपुट आपको 100 की आती, देन आपका 100 का इन्वेस्टमेंट चला जाता, राइट? देन देयर वोंट बी एनी एनर्जी रिलीज्ड. It depends on the strength of bonds. If the breaking of bonds is very difficult, then you will have to spend a lot of energy in breaking the bonds. And whenever the new bonds are formed, the relatively lesser amount of energy will be released there. So, heat released or the heat absorbed during a chemical change is due to the difference between the reactant bond energies and the product bond energies. Got it? Whenever, suppose, now these are the values. When you break H2 bond, the bond between two hydrogen atoms, 1 mole of the bonds, not one bond, 1 mole bonds, when you break them, 435.8 kilojoule per mole is required. This is the amount of energy required. So this is called what? What is this? This is bond dissociation energy of H2 or bond energy of H2 or atomization energy of H2. 3 वर्ड्स बोले मैंने, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी. मींस जब आप ये बॉन्ड तोड़ते हो, व्हेन यू ब्रेक दिस बॉन्ड, you get 2 atoms. Yes. So whenever you break a molecule into atoms, the process is called atomization. So since this process is also known as atomization, so this energy will also be called atomization energy. But here you are actually breaking the bond. So this is also called bond dissociation energy or bond energy. All 3 terms can be used for this value. समझ गए ये? They're all same. O2, you break this bond, again you get atoms. So this is also atomization energy. N triple bond N. Now clearly, single bond से double bond strong होता है, double bond से triple bond strong होता है. Single bond is weaker, double bond is stronger, triple bond is even stronger. That you can see in these values, 435, 498 and then 946. Okay, then you break HCl, 431. Got it, fine. So what is the bond energy? Bond energy is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type. What is the meaning of this? Of a particular type. Particular type between 2 atoms in a gaseous state means bond energy of CH will be different. Yes. Bond energy of CC will be different. Yes. Bond energy of HH will be different. Of OH will be different. Okay. So this is a particular type of bond because this is between carbon and hydrogen. This one is a particular type of bond because this is between 2 carbons. This is a particular type of bond because this is between 2 hydrogens. And this is a particular type of bond because this is between O and H, oxygen and hydrogen. तो एक पर्टिकुलर तरह के बॉन्ड्स के एक मोल बॉन्ड तोड़ने हैं, एक बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग? 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. गॉट इट? तो बॉन्ड एनर्जी सिंपल ना, बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड एनर्जी. इज इट क्लियर? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? चलिए, मुझे जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक H2, Cl2, O2, N2, उनके लिए तो आपने देखा कि द बॉन्ड एनर्जी प्रोसेस एंड द एटमाइजेशन प्रोसेस इज सेम. बॉन्ड एनर्जी को ही हम एटमाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं. ओके, वी कैन कॉल द बॉन्ड एनर्जी एटमाइजेशन एनर्जी, राइट? बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इट इज नॉट द सेम.
पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अभी बच्चे बॉन्ड एनर्जी सिंपल, मतलब यार बॉन्ड तोड़ना है। ओके, जैसे सी एच की बॉन्ड एनर्जी आपको बोलेगी 438 है, एच की बॉन्ड एनर्जी H2 की 435 है। दैट मीन्स एक मोल एच बॉन्ड मेरे को तोड़ने हैं, एक मोल, देन आई विल रिक्वायर 435.8 किलो जूल। तो सर अगर सिंगल बॉन्ड तोड़ना हो तो 435.8 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर लो, ठीक है। मतलब यार उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी, सिंपल। ओके, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है द सेम इज एटमाइजेशन एनर्जी। और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, सपोज इफ आई ब्रेक H2O into OH plus H, if I break H2O into OH plus H, can I call this process atomization? बताइए, can I call this process atomization? बोल सकता हूं क्या इसको मैं? नहीं सर, नहीं। Why? Because H2O giving you OH plus H, H is an atom, OH is not atom। तो यहां पर भी मैंने बॉन्ड तो तोड़ा, बट आई एम नॉट गेटिंग एटम्स, राइट? तो दिस इज नॉट एटमाइजेशन। तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एटमाइजेशन एनर्जी विल बी डिफरेंट। When you break H2O to give you 2O plus H, this is atomization process. This is atomization. But this is not atomization. Bond energy only divided for covalent compounds. Covalent के लिए एक defined bond है. Ionic के लिए it is not a single bond. समझो, for ionic compound, suppose I talk about NaCl. NaCl is not a molecule where you will just break this bond. No, NaCl is a crystal. There will be so many Na positive and so many Cl negative. Okay, जब आप NaCl की बात करते हैं, it's a crystal, so there will be so many ions. So depending on if it is a smaller crystal or a bigger crystal. Okay, so the amount of energy required will also depend on if you have a smaller crystal or you have a bigger crystal. So ionic solids के लिए we talk in terms of lattice energy. We do not talk in terms of bond energy because it's very difficult. You do not specify a bond like Na and a single bond and a Cl. No, these are not molecules. It's a lattice structure. It can be very big based on the size of the crystal, or it can be very small. So ionic के लिए instead of using bond energy, we use lattice energy. Okay, and for covalent compound, we use the term bond energy. Is that clear? सबको समझ आ गया ये? Just a second. राइट, देखो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, प्लीज पे अटेंशन हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस मॉलिक्यूल H2O, टेल मी बोथ बॉन्ड्स आर सेम? दोनों बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है? यस सर, बोथ बॉन्ड्स आर सेम। दैट मीन्स इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी सेम। सेम एनर्जी लगनी चाहिए दोनों को तोड़ने के लिए, सर लगनी चाहिए, and they should require same amount of energy. But now look at the data. When I break this bond here, when I break this bond and gives you OH plus H, the energy required is 502 kilojoule per mole. That is the energy required. Then after that, when you break this OH into H plus O, it is 427. Why is it different? In both the steps, I am breaking the same bond, the bond between oxygen and hydrogen. Why does it require different amount of energy in both times? Cause of the environment. Here, the bond is not alone. There is a neighbor.
Because of the presence of this neighbor and two lone pair of oxygen, there will be some attraction, repulsion. Means there is some influence of the neighbor. When you break this, the energy required is different. Now, when you're breaking this bond, there are no neighboring atoms. There is no external influence of attraction, repulsion, something like that. No. So that is why energy required is a little different. So if I ask you, Bache, tell me what is the bond energy of OH? Will you say 502 or will you say 427? You will say the average. Okay. So in such cases, you do not talk about the individual value, you talk about the average value. So that is average bond energy. Got it? समझ आया? Average bond energy. Similarly, if I have CH4, then do you think all four bonds will require same energy? No. This bond maybe require x1 amount of energy. This bond breaking will require x2. This bond breaking x3, and this bond will require x4. So what is my average energy? X1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4. Got it? Average bond energy is defined for polyatomic molecules, and bond energy is mostly defined for diatomic molecules. So this is some data for bond energy values. You don't have to memorize it. It is just to give you some idea about which are the strongest bonds and which are relatively weaker. Look, silicon fluorine bond is the strongest, 582 kilojoule per mole. Okay, very strong bond. So HF again a very strong because shorter bond. Jitna chota bond hoga, smaller the bond, stronger the bond. Okay, there are some exceptions like F2 is a very small bond, but it is very weak. Why? Because F2 में repulsion होता है. Both fluorine have 3 lone pair, so there is too much repulsion. But otherwise, smaller the bond, stronger the bond. HF देखो strong है, PF strong है, CF strong है, OH is a strong bond, H2 is a strong bond, HCl is a strong bond. Okay, and important thing is H2 is stronger than CH and carbon-carbon bond. What? H2 is stronger than CH or carbon-carbon, and OH is even stronger than that. ठीक है, कार्बन इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन, एंड डबल ट्रिपल तो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते ही होते हैं. When you just go through this data, you don't have to memorize it. You just need to go through it so that you get an idea about, okay, these are the stronger ones and these are the relatively weaker ones. And this potential energy diagram, just go through it and tell me, do you understand this graph or do I need to explain it? आपको समझ आ रहा है ये वाला ग्राफ, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? देखिए, explaining this, the main thing is you need to understand when Na positive and Cl negative are coming closer, attraction होगा. Yes. तो दिस अट्रैक्शन वाला ग्राफ जो है ना, वो एक्चुअली ये जा रहा था ऐसा. एक्चुअली आप जो ये वाला ग्राफ पढ़ते हो ना, ये आपकी बुक्स में ये वाला ग्राफ होता है. दिस ग्राफ इज एक्चुअली द ओवरऑल ग्राफ, द रिजल्टेंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. बिकॉज अट्रैक्शन का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे, लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो इनिशियली ग्राफ इज गोइंग डाउन. व्हाई? बिकॉज अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रिपल्शन. और स्टार्टिंग में रिपल्शन है ही नहीं. ये रिपल्शन का ग्राफ रेड वाला, दिस इज द रिपल्शन ग्राफ. You can see repulsion here is almost zero. Repulsion started from here. It started from here. It's a short range force. Repulsion is a short range force. It starts only when the particles come very close to each other. The repulsive interactions are
short range forces, and attraction are long range forces. This is clear to everyone? Okay. When the distance between the ions is greater, only attraction is operating between them. So that is why the total energy is based on the attraction. Starting a graph up to this point is same as the attraction curve. After this, kya hua? Repulsion has started. The repulsion is trying to raise the energy. Attraction is trying to lower the energy. But repulsion is a very strong force. नॉर्मली रिपल्शन काम नहीं करता, पर जब करता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से करता है. So when it acts, it's a very strong force. So because of this repulsion, the total energy graph will now start to go upward. Okay. So from this point, you can see the green graph is going down and the total energy graph is going in a different direction. The green one is the attractive interaction. Red one is the repulsive. And this violet one is the overall. समझ आया? What you study in your books is actually the overall energy, not the attractive one or not the repulsive one. And repulsive only starts from this point, very close, and then it suddenly goes up. It suddenly becomes very strong. ठीक है? Is it clear now? सबको समझ आ गया? You don't have to memorize anything. You just need to understand how the attraction or attractive interaction graph is designed or it looks like, and how the repulsive interaction graph looks like. Okay, next is bond order. What exactly is bond order? Array, single bond is 1, double bond is 2, triple bond is 3. It is the number of bonds. Okay, if there is a single bond between two atoms, the bond order is 1. Double bond order is 2. Triple bond order is 3. There are not 4 bonds. Okay. Sir, can bond order be fractional? Can bond order be 1.5? Yes. Bond order can be fractional. Okay. Bond order can be fractional. For example, in benzene जब आप देखते हैं, benzene में, what are these? Is this a double bond and this is a single bond? No. Sir, all bonds are same. Because if 3 are double bonds and rest 3 are single bonds, so that means we have 2 types of bond length. Single bond is longer, double bond is shorter. But in benzene, actually all bonds are same. That means this double bond, these 3 double bonds are divided among all 6 positions. So 3 को 6 में divide करना है. I have to divide 3 among 6 persons. सबको कितना कितना मिलेगा? Everybody will get half. Yes. So single bond is always there. So over the single bond, additional कितना मिल रहा है सबको? Half. तो bond order कितना है? 1.5. Right? ठीक है. Similarly, if you take an example of carbonate ion, इसको मैं आगे resonance में भी explain करूंगा. If you take the carbonate ion, here you will see this is the double bond, rest 2 are single bond. Really? Actually, all 3 bonds are same length. Why? Because when you draw the resonance structure like this, sometimes this can be the double bond and these 2 single. Sometimes this can be double bond and these 2 single. So mean double bond is not fixed. It is shared equally in 3 positions. So single bond is always there. Yes. And double bond is shared by 3. So everybody gets 1/3. Yes. So what is the bond order? Single bond is always there. Plus 1/3 is additional. So that is 4/3. In carbonate, the bond order is 4/3. ठीक है? Got it? समझ आ गया ये? इसको आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे. Then एक पॉइंट आपको याद रखना है. बच्चे isoelectronic species have same bond order. That means isoelectronic means the species that have same number of electrons. For example, isoelectronic species देखो, like F2 and O2 negative. They both have how many? 18 electrons. They both have same number of electrons. So इनको isoelectronic कहेंगे. So they will have same bond order.
तो अगर आपको कोई पूछे O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव, यू नो F2 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर, 1। एनीबडी हु इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F2 वो कौन है, O2 नेगेटिव। जो F2 हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, O2 हैज 16, 16 में 2 और ऐड कर दिया 18। O2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा। यू डोंट हैव टू यूज MOT फॉर दैट, यू हैव टू यूज कॉमन सेंस फॉर दैट। N2 has a triple bond, yes, how many electrons, 14 electrons। CO again 14 electrons, so the bond order of both will be 3 because they have same number of electrons, got it? So whether it is N2, CO, Cn negative, NO positive, they all have 14 electrons, so that is why they all will have same bond order। is it clear to everyone? सही है बच्चों? Now which one has highest and lowest melting point and why? Highest and lowest melting point and why? Simple question। अच्छा टेल मी वन थिंग अभी, बिकॉज वी आर गोइंग स्टेडीली, आराम से कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग वेरी फास्ट। तो आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू हरी अप और फिनिश द टॉपिक फास्टर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू make you understand things properly, because if you understand things properly you will spend less time in revision and it will require less effort to retain the information, because if you cover it very fast, जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो लगेगा कि हाँ हो गया, बट भूल जाओगे और रिवाइज करने में दिक्कतें आएंगी। इंग्लिश वाले बच्चे अभी भी क्लास में हैं? इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस स्टिल इन द क्लास? देखो, हाईएस्ट विल बी द हाईएस्ट द साइज, क्योंकि बिकॉज Q1 Q2 इज सेम, तो लेटिस एनर्जी नाउ डिपेंड्स ऑन R, तो विल डिसाइड बेस्ड ऑन R। ठीक है, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, हु हैज द लोएस्ट बॉन्ड लेंथ? किसका होगा? NaCl का। R is minimum, maximum, and CHCl has a maximum value of R, that is why it will have minimum melting point। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों पुलिस आ गई यार क्लास में। एनीबडी जम्प रेड लाइट? कुछ सिग्नल तोड़ के भागा है? नहीं? और कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाया हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई हो? देख लो, मतलब वी आर पुलिस इन द चैट, तो लाइक कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं तो डाल लो अभी, चलान कर सकता है। नेक्स्ट वन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम हैलाइड्स, ये बताइए। नेक्स्ट वन, चलो अच्छी बात है, नाम चेंज करके सही रहता है, लोगों को वही है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वो तब तक समझ नहीं आता जब तक भरना स्टार्ट नहीं होता है, फिर लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए
This is one big problem with online platforms, right? Because identity reveal नहीं होती तो people start doing like bad things, stupid things. चलिए इसमें क्या होगा, देखो सीजियम हैलाइड की अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, अगेन Q1 Q2 वाले पार्ट पे आएगा. कैटायन इज सेम, इसलिए एज एनायन बिकम्स बिगर क्या होगा, एनायन बड़ा होगा तो मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन से क्या होगा, मोर कोवलेंट नेचर, उससे लोअर मेल्टिंग पॉइंट. तो सबसे कम किसका होगा, सीजियम आयोडाइड का. सबसे बड़ा किसका होगा, सीजियम फ्लोराइड का. ए ऑप्शन. बोर्ड पे यार फील आता है, पर बोर्ड का मेरे को उतना वैसे कंफर्टेबल नहीं लगता. इस पे लिखना इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, आराम से, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड सुकून में. बोर्ड पे इट्स वेरी स्ट्रेसफुल भी है, टायरिंग भी है, आइज पे भी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, एंड लिखना उतना इजी एंड रेजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं है. कि अगर मेरे को ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वाइट डायग्राम को दिखाना है, वो एकदम से कॉन्ट्रास्ट में चला जाता है पूरा. ओवर एक्सपोज हो जाती है सारी, वो दिक्कत रहती है. ब्लैक में फिर सब कुछ ब्लैक यूज़ करना पड़ता है. ब्लैक में यू डोंट नॉर्मली गेट एवरी इमेज इन ब्लैक. देखो नेक्स्ट वन, विच अमंग जिंक कार्बोनेट एंड एमजी कार्बोनेट इज थर्मली मोर स्टेबल. थर्मल स्टेबिलिटी वाला तुम लोग इसको एक काम करना, होमवर्क में कर लेना, विल डिस्कस इन द क्लास शाम को 4 बजे. ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात तुम्हारे को धीरे धीरे बताऊंगा मैं, नेक्स्ट में करेंगे इसको. थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आई वांट यू गाइस टू रीड फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड देन आई विल एक्सप्लेन, तो उससे ज़्यादा मजा आएगा. तो दिस इज होमवर्क फॉर यू. नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, जल्दी से, किस पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी पे. यस, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई. तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, राइट. नेक्स्ट वन, आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं. क्रिस्टल, यू ड्रॉप द क्रिस्टल, एकदम से टूट जाता है वो, ये डेंट पड़ता है उसमें कभी, है ना. क्रिस्टल्स में कभी डेंट नहीं पड़ता, इट विल सिंपली ब्रेक, राइट. So crystals or ionic compound are actually hard and brittle. So this is true, but we have to explain they do not have high melting and boiling point. This is also true, they do have directional properties. Ionic bonds direction होते हैं क्या? No. चलिए आपको ये चीज बताता हूं मैं. Let's try to understand this. Ionic bonds are non-directional. So for all the English speaking audience, I'll just say one thing. If you understand the lectures and you want like me to explain in English, do tell your friends, because it's all audience based. Okay, because it's not my decision whether to teach in Hindi, English or English. It is the audience. You can bring your friends to the class. Okay, you can definitely have that kind of arrangement. देखो, ionic bonds are non-directional. Why? Suppose this is a cation, okay, and there is an anion nearby. Now, if there is an anion here, or anion here, or here, or here, and the distance is same, do you think the force will be different? If the cation and anion are at a distance r, then the force is Q1 Q2 upon r square. Force doesn't depend on the direction from where the anion is coming. Anion might be coming from this position, this direction, or from this direction, or from this direction, or from this direction. It can be coming from any direction as long as the distance between the two is fixed. Angle of approach doesn't matter. तो
Ionic bonds are not like, no, I'll overlap or I'll form bond in this direction, not in that direction. No. Ion will attract from all sides, all 360-degree angle, it will attract. ठीक है? Yes, बच्चों देखो, I can use, in the beginning we were all teaching in English only. We made all these non-academic videos, non-teaching videos in English only. Yeah, we can maintain a balance. I'm not saying that we'll directly convert the entire channel. We're just saying that depending on the audience, we can maintain a balance between both languages. Okay, we just need student to be active. Okay, that's it. So ionic bonds are non-directional, but covalent bonds, they have to overlap. And when you talk about the overlap, if I have a p orbital and it has to overlap with another p orbital, it is possible only from a certain direction. Na? If this is px, it can overlap only with the px, like this. It cannot overlap with the py, right? Where overlapping is required, like covalent bonds, direction is very important. So covalent bonds are directional. Now you understood? Understood? Everybody clear about this? So direction properties don't have direction properties. That is true. They do not have direction properties. They are soluble in polar solvents. Yes, they are soluble in polar solvents. Next one, the bonds present in N2O are N2O. Draw the structure and then tell me what is the answer to this question. Covalent bond. देखो, N2O, first of all, these are all non-metals. All the atoms are non-metal only, right? It cannot have any ionic bond. It cannot have ionic bonding. Why? Because all atoms are non-metals. Ionic bonding takes place between metals and non-metal. So there are only nitrogen and oxygen. Okay. So only ionic, wrong. Covalent and coordinate bond. Look, if you draw the structure for N2O, okay, what will be the structure of N2O? This can be one of the structures of N2O. Okay. So can there be covalent bond? Yes, there can be covalent bond. Okay. Yes. This one is actually coordinate bond. This plus minus represents actually coordinate bond. This nitrogen is donating both of its electron to form the bond here. Yes, covalent भी है, coordinate भी है. Whenever covalent bond is formed, होता क्या है देखो, जब भी covalent bond, sorry, coordinate bond जब बनता है,
A has both electrons, ठीक है, and these two electrons are used to form the bond like this. Okay, so A gets a positive charge. You can write it like this: A gets a positive charge and B gets a negative charge. Whenever there is a bond between two atoms, single bond, and one has a positive charge, one has a negative charge, you can say that it is a coordinate bond because nitrogen has 5 valence electrons, 1, 2, 3. Rest 2 were directly used for this bond, directly used. That means oxygen did not use any of its valence electron for the bonding. ठीक है? Yes, Bachi Ashika, just send me the detail. Let's see what can be done. ठीक है? किस प्लेटफॉर्म पे? चलो जस्ट पिंग मी, टेलीग्राम पे पिंग कर दो मुझे. No need to share the details here. देखो, next one, the compound which contain both ionic and covalent bonds is. चलिए ये वाला बताइए. VBT नहीं बचे, अभी तो VSCPR स्टार्ट होगा इसके बाद. इसके बाद VSCPR स्टार्ट करेंगे. टाइम लगेगा. बॉन्डिंग एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है. वन ऑफ द बिगेस्ट. चलिए 12th को बच्चे, ये क्लास तो आज ही शेड्यूल था, कल तो MOT वाली क्लास होगी. देखिए, द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स इज KCN. KCN में अगर देखो CH4 की अगर हम बात करें, ऑल आर कोवलेंट. व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल्स हैं. कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स, देयर कैन नॉट बी एनी आयनिक बॉन्डिंग. H2, it's a pure covalent bond. KCN has ionic plus covalent. How's that? Because in KCN, K positive is the ion, CN negative is the anion, cation anion. But in the CN, between the carbon and nitrogen, there is a covalent bonding. And between K positive and CN negative, there is ionic bonding. Okay, so KCN. Next, which of the following compound is covalent? Fast. 10 seconds. H2, just we just discussed. H2 purely covalent. Calcium oxide is mainly ionic, क्योंकि calcium 2 positive ion and O2 negative ion, metal plus non-metal. KCl is ionic. Na2S ionic. The ion that is isoelectronic with CO. CO has how many electrons? 14 electrons. Cyanide 14. O2 positive 15. O2 negative 17. N2 positive 13. Okay, simple question, very basic question. The bond between two identical non-metal atoms has a pair of electrons. Okay. Fast. क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बेटा? दो आइडेंटिकल नॉन मेटल्स हैं, लाइक Cl2 आइडेंटिकल, और H2 और O2 और N2, राइट? दे आर आइडेंटिकल. सो आइडेंटिकल में क्या होता है? द टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वली शेयर्ड.
because there will not be any polarity, because there is no electronegativity difference. There is no polarity at all. So both electrons will be equally shared. Okay. Because there is no electronegativity difference. So no polarity, non-polar bonds. The type of bond present in copper sulfate dot 5H2 are only. Solve this question fast. Very simple question. सॉल्व हो गया. देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में क्या बचे? कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. Between them there is ionic bonding, and in the sulfate ion there is covalent bonding. Then dot 5H2O, okay, there is coordinate bonding. Okay, it's a coordination compound actually. So because being a coordination compound, water molecules are directly coordinated to copper 2 positive. You can say this you will study in coordination compounds. I'm just telling you, from oxygen there is a donation, there is coordinate bond also, and there is hydrogen bond also actually. In this question, if I have to modify this question, I will also include the hydrogen bonding. So there is electrovalent, yes, that is ionic bonding. There is covalent, there is coordinate, and plus there is hydrogen bonding also. So this is one of the beautiful compound. Okay, and your homework is structure of copper sulfate dot 5H2O. You have to find the structure, you have to study the structure of copper sulfate dot 5H2 just for your, so you will learn something new. Okay, so there is ionic, covalent, coordinate, and hydrogen bonding. All 4 types of bonding are present in this. Okay, chalo, solubility part. Let's start with the solubility part. Now, solubility, we also discussed in the last class, solubility is about like dissolves like, and there are many factors that decide the solubility. It is not a very simple phenomena. Solubility is very typical phenomena, and there are so many factors that play a part in deciding the solubility. कि कौन ज़्यादा soluble होगा, कौन कम soluble होगा. ठीक है? ये जैसे का बच्चे, I got the photos. ठीक है? Let's discuss after the class. Okay, the solubility of ionic compound depends upon several parameters like lattice energy, hydration energy, polarization, packing pattern, entropy, etc. इसीलिए we will not go into the details of the solubility because there are so many factors and it is not possible for you to actually understand, because in different compounds the order, the solubility order will be different. Okay, and now one other thing that I want to discuss with you is the size of gaseous ion versus hydrated ion. Okay, whenever we write Na positive gaseous and we write Na positive aqueous. What is the difference? Na positive aqueous is the hydrated ion. So hydrated ion is surrounded by water molecules, and because of the surrounding by water molecules, the overall size increases. Like Na positive, radius is 116, Ka positive is 152. But when Na positive is surrounded by 13 water molecules, that is, it is hydrated, size become 276, more than doubled. And from 152, only 232. Why is that? This gaseous ion is bigger, but its hydrated size is smaller.
Because smaller the size, greater the hydration. Got it? Smaller the size, greater the hydration. So Na positive being smaller is more hydrated. It is surrounded by 13 water molecules. But K positive is surrounded by only 7 water molecules. So as the ion becomes bigger and bigger, the hydration becomes less and less. Okay. So in gaseous phase, this is bigger, but in hydrated phase, this is bigger. In hydrated phase, the size trend just reverses. The biggest ion in the gases will be the smallest in the hydrated form. Okay. So the entire trend is reversed. Okay. Now look at the hydration enthalpy. When Na positive is surrounded by, in this case, 13 water molecules, you don't have to memorize how many water molecules. This is just to tell you actually why the difference is, why the size is different. Because smaller ion is easier for the water molecule to surround. When Na positive is hydrated, 406 kilojoule per mole energy is released. When Mg2 positive is hydrated, 1920. Aluminum 3 positive, 4600. Why is that? Charge. Because 2 positive is smaller in size. 3 positive is even smaller in size. As the size is smaller, much bigger hydration. Okay. So the difference in energy is huge. Why is that? Why such a huge difference? More than 10 times. Why more than 10 times? Because of the charge density. Okay. Aluminum 3 positive is very small and a lot of charge. 3 times the charge, triple the charge, 1 positive and 3 positive, and much smaller size. So that overall gives it a lot of charge density, that is charge per unit volume. So this high charge density gives it a very, very good hydration and very high value of hydration enthalpy. The reason is charge density. The charge is also increased and size has reduced, making the charge density very, very high. Is it clear to everyone? So once you have seen the values, and now I'll explain one more thing, one more concept from this. You might have seen that aluminum always form aluminum 3 positive ion. Always. It never forms aluminum 1 positive. Why is that? Because if you write the configuration for aluminum, aluminum is in 13th group. So 13th group means S2P1. S2P1 means it can lose only one p electron and form a 1 positive ion, but it does not. Why? And another logic is that it is easier to lose 1 electron. It is difficult to lose 3 electrons. Why it loses 3 electrons और ये ट्राई पॉजिटिव कैटायन क्यों बनाता है? Why? क्यों बना रहा है ट्राई पॉजिटिव? Because the reason is क्यों बना रहा है? No doubt, energy requirement is more. But once it forms the 3 positive, the charge density is so high, the hydration enthalpy will be so high, okay, that it is like you are actually putting more investment here for removing 3 electrons. आपका एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं. अगर ये एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव होता, had it been 1 positive ion, returns would not have been so strong. तो 3 पॉजिटिव में ये बोल रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है, रिटर्न्स और भी ज्यादा हैं. ओके, तो दिस इज द रीजन व्हाई एल्यूमिनियम फॉर्म्स ओनली 3 पॉजिटिव एंड नॉट 1 पॉजिटिव. ओके, एंड दिस इज जस्ट द ग्राफ फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ goes from like NaCl solid 788 kilojoule per mole is required to break it. The entire solvation procedure. You just see this diagram carefully. हमारे पास NaCl solid था, ठीक है. To break it into Na positive plus Cl negative gaseous, we have to provide lattice energy.
तो जब NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, व्हेन वी डिसॉल्व NaCl इन वाटर, तो पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा। पानी में जाके डिसॉल्व तभी होगा ना, व्हेन इट विल ब्रेक इनटू इट्स आयंस। तो फर्स्ट it takes lattice energy to break it into gaseous ions. Then Na positive will be hydrated. Na positive aqueous, 406 kilojoule is released. Then Cl negative will be hydrated. 378 will be released. Okay, so 788 is your investment and 784 is the return. Not a good thing. You are still at a loss of 4. 4 का लॉस अभी भी हो रहा है, बट ये 4 किलो जूल का जो एनर्जी है, दिस इज नॉट अ बिग एनर्जी डिफरेंस. दिस एनर्जी कैन इजिली बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉल्वेंट. पानी में जो आप डालते हो सॉल्ट को, तो वो पानी के टेम्परेचर से ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा. इट विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स. So this is not a big amount of energy that it cannot like absorb from the surrounding. It can easily absorb this much amount of energy from the surrounding, and this is why NaCl will easily dissolve in water. हाँ, ठंडा पानी होगा अगर बहुत, then the dissolution will be slow because ठंडे पानी में थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी. तो ये 4 का जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है ये थोड़ा मुश्किल होगा. गर्म पानी होगा, it will dissolve faster because the thermal energy will be very high of the hot water. So this additional 4 amount of energy जो required था, it is very easily available for that. Okay, everybody clear about the solvation of NaCl? How lattice energy and hydration energy play a role? ठीक है बच्चों, एवरीबॉडी डन? चलिए, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी का है. दिस आई विल डिस्कस इन, इसको छोड़ दो यार, ये तुम्हारे काम का नहीं है, लीव इट. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. थोड़ा जेई काम का है. ठीक है, ग्राफ है. ग्राफ जस्ट ये बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ उसको. ये सिर्फ हेलाइड्स के लिए है. दिस इज ओनली फॉर अल्कली हेलाइड्स. मैक्सिमम मिसमैच इन साइज. मिसमैच इन साइज का मतलब क्या है? मिसमैच इन साइज का मतलब होता है कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है. यही हुआ मिसमैच. कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है. ओके, या कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है. राइट, जितना बड़ा डिफरेंस होगा. जैसे कि LiI में कैटायन सबसे छोटा है, कैटायन इज द स्मॉलेस्ट, एनायन इज द बिगेस्ट. अल्कली हैलाइड्स का स्मॉलेस्ट कैटायन ले लो और बिगेस्ट एनायन ले लो, साइज का डिफरेंस बहुत बड़ा है. तो देखो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी. लिथियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी ये है. ओके, और LiF की कितनी है? LiF की ये है. ठीक है, ये आयोडाइड वाला ग्राफ है और ये फ्लोराइड वाला ग्राफ है. देखो लिथियम फ्लोराइड यहाँ पे है बहुत कम, क्योंकि कैटायन भी छोटा है, एनायन भी छोटा है. और ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किसका है? ये सीजियम फ्लोराइड का है. तो सीजियम कैटायन में सबसे बड़ा, फ्लोराइड एनायन में सबसे छोटा है. अगेन मिसमैच. तो यहाँ पर जितना मिसमैच होता है साइज में, उतनी सॉल्युबिलिटी आती है. एंड दिस लॉजिक को सब जगह नहीं लगाना है. दिस लॉजिक इज ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी अल्कली हैलाइड्स. ठीक है, डोंट अप्लाई इट एवरीवेयर. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को थोड़ा और डिटेल में अभी तो नहीं जाएंगे हम, बिकॉज उतना डिटेल में नहीं पूछता. डू मेमोराइज दिस. सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वंस आई विल जस्ट मार्क, जो आपको हर हाल में याद करने हैं. नाइट्रेट, आयोडाइड, देन
कार्बोनेट, सल्फेट, ये आपको याद करने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ओके, नो नीड टू अप्लाई ब्रेन, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन इज टिपिकल, and explanations, it is not just one explanation, it will be like multiple explanations for different cases. तो solubility के बहुत ज़्यादा cases बनते हैं, and that is not required for NEET. इसीलिए किसी को समझना हो तो they can ask in the doubt session. It's not that I won't be explaining, it's just that you don't need the explanation, you just need the data. यहाँ ये सर पढ़ लिया हमने, ये याद कर लिया, and then another one, this one, lithium carbonate and bicarbonate, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स में क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके, बट अल्कली में क्या है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट्स अ स्टार्क डिफरेंस। ग्रुप 2 के कार्बोनेट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और सल्फेट में भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। दीज आर ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 के कार्बोनेट एंड सल्फेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट जो अल्कली का कार्बोनेट है और अल्कली का बाई कार्बोनेट है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बारे में वी विल डिस्कस इन एस ब्लॉक, बिकॉज एनसीईआरटी हैज कवर्ड दिस इन एस ब्लॉक, ठीक है। डन, चलो नेक्स्ट बात करें बच्चे रेजोनेंस की। तो कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए अभी एस सी पी आर भी स्टार्ट भी नहीं किया। अभी रेजोनेंस, रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, उसके बाद वी एस सी पी आर है, फिर वी बी टी है, ठीक है। क्या करना है, अभी करना है इसको, बाद में करना है, कल करना है इसको, बताओ। वी एस सी पी आर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम एक काम कर सकते हैं, वी एस सी पी आर को कल कवर कर सकते हैं, वी एस सी पी आर प्लस वी बी टी प्लस रेजोनेंस, है ना। फिर आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटे का क्लास मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहता है, 2-2 घंटे का होता रहे, दैट इज़ कन्वीनियंट सबके लिए। कल करने से मुझे ये लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा टाइम मिलेगा, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग इज अ बिग टॉपिक, आई डोंट वांट टू फिनिश इट वेरी फास्ट। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा टाइम लो, समझो उसको, अच्छे से पढ़ो, सोचो, उसके ऊपर डिस्कशन करो, डाउट पूछो, डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसके जब ऊपर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊंगा मैं, तो वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आराम से 200-250 क्वेश्चन तो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है। पीवाईक्यू सारे करेंगे इसके ऊपर, असर्शन रीजन इसके ऊपर करेंगे, फिर एक्स्ट्रा जे के कुछ पीवाईक्यूज विल डिस्कस, ओके। 2 hours is like a decent amount of time, not very tiring for you. तो अब ये बताइए जल्दी से कि how was today's class, what are your inputs? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इनपुट्स देना है, ठीक है, और कमेंट से बता देना सेशन कैसा रहा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है, एवरीथिंग। बिकॉज देखो आई एम नॉट, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं उनको सब समझ आए,
आई वांट इट टू बी वेरी वेरी कस्टमाइज्ड फॉर यू गाइस, कि आप लोगों को परफेक्टली समझ आए। बाकियों को कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज नॉट माई कंसर्न। आप लोगों को कितना आ रहा है, दैट इज माई मेन कंसर्न। तो लाइट भी चलेगी तो मुझे लग रहा है कि यही ये समय है कि पान का इशारा हो गया कि बेटा हो गया आज के लिए डन। ठीक है, खराब ना लग रहा है की लाइट से काम। डन, चलो ठीक है, हम एंडिंग द सेशन नाउ। मिलते हैं फिर कल सेशन में, कल वीएससी पे फिर स्टार्ट करेंगे। ओके देन बच्चों,